सो दर तेरा केहा सो कर केहा चित पै सर्ब संभाले बाजे तेरे नाद नेक असंखा केते तेरे वावण हारे केते तेरे राग प्रीस्यो कहिया केते तेरे गावण हारे गावण तुनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावण तुनो चित कुपथ लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावण तुनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावण तुनो इंद्रासन बैठे देवत्या दर नाले गावण तुनो सिद्ध समाधि अंतर गावण तुनो साध विचारे गावण तुनो जति सती संतोखी गावण तुनो वीर करारे गावण तुनो पंडित पढ़न लिखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावण तुनो मोनिया मनमोहन स्वर्ग मच प्याले गावण तुनो रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले गावण तुनो जोध महाबुल सूरा गावण तुनो खानी चारे गावण तुनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुनो गावण जो तुत पावण रते तेरे भक्त रसाले होर कहते तुनो गावण से मैं जितना आवण नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैप्पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिसदी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना चाहे सो पातशाह सहापत साहेब नानक रहन रजाई असा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोय केवट वड्डा टीठा होए कीमत पाए ना कहा जाए कहने वाले तेरे रेसमाए वड्डे मेरे साहिबा गहन गबीरा गहर गबीरा गुरे गहीरा कोई न जाने तेरा कहता कीवट जीरा रहा सब सोचती में सुध कमाए सब कीमत में कीमत पाए मिल कीमत पाए ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाय कहना जाए तेरे टेवड़ियाई सब सत सब तप सब चिन्याइयां सदा पुरखा किए वडियाइयां तुदविन सिद्धि किने न पाया कर्म में लेना ठाकर आया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सत सवार हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊं आखन औखा साचा नाव साचे नाम की लागे भूख उस भूखे खाई चलिए दुख सो क्यों विसरै मेरी माय साचा साहिब साचे नाय साचे नाम की तिल वडियाई आख थके की मत नहीं पाए जे सब मैल के आखन पाए वड्डा ना होवे काट न जाए ना ओ मरे न होवे सो देंदा रह न चूके पोक गुण एहो होर ना ही कोई ना को होआ ना को होए जेवड़ आप ते वड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती दात रात खसम विसारे ते कमजात नानक नावे बाज सनात रात बजने मल्ला चौथा हर के जन सतगुर सिर पुरखा बिनो करो गुरपास हम किरे क्रम सतगुर सरनाई हर दया नाम प्रकाश मेरे मीत कुंदेव मोको राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हम कीरे थमरी है राष्ट्र हाउ हर जन के वड पाग वडेरे जो हर शब्द जिन हर शब्द हर प्यास हर नाम ला तृप्ता से मर संगत गुण प्रकाश जिन हर नाम ना पाया जे पाग जही जंपास ते पाग जही जंपास जो सतकर संगत में आए त्रिक जीवास दिन हर जन सतकर संगत पाए तिन तरमस्तक लिखिया लिखास तन तन सत्संगत मिल जित हरस पाए मिल जिन नानक नाम प्रगास सागर श्री महला पंचमा काहे रे मन जित पे उत्तम चाह आहार जो पर्या सैप तम जंतु पाए ताकर जे अकल कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद क्रंपत पाया सुके कास हरिया राव जन्म तालो संपन्ता कोई ने किसकी तरिया सिर रिजक सबाहें ठाकर काहे मन को करया उड़ा वैसे कोसा इस पचे चरिया तुम कमन कुला फिर कमन चकावे मन में सनंद करया समन दांत शास्त्रान ठाकर कर तरया जे नानक पल सबल जय आ तेरा ना पारा
राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गमा गम पारा सब त्यावे तुझी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख वसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी के नाने जंत विचारा तू कट कर अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक जाते एक भिखारी जी सब तेरे जोर विडाणा तू आपे दाता आपे पुख्ता जी हो तुत बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आँख वखाना जो सेविया तुझी जिन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझी से जिन जुग में सुखवासी से मुक्त पे निहत आया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन पाओ जिन हर ने पाओ त्याया जी तिनका पाओ सुखवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर रूप समासी से तन जिन हत्याया जी जिन नानक ते बुझासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े वो सिमर साष्टी कर करया कट कर्म करंता से भगत परे जो जिन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पर अपरम करता जी तू जेव अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोए तू आपे पावे सोए वर्ते जी तू आपे करे सो होए तू आपे से सो पाए जी तू आपे से सब गोए जिन नानक गुण गावे करते कर जिन नानक गुण गावे करते के जी तू सबसे का जानोए आसा महला चौथा तू करता सठिया मैदा साई जो तो पावे सोई थी सी जो तो दे सोई उपाय रहा सब तेरी तू सब नित्य आया जिसनो कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोरिया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुद बिन दूजा कोई नाए जी जन सब तेरा खेल विजोग मिल विछोरिया संजोगी मेल जिसनु तू जाने सोई जन जाने हर गुण सधी आँख वखाणे जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोय तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरे पहले निवासा पानी पवक तिन्हें किया पंकज मुँह पग नाही चाले हम देखा तन डूबियले मन एक न चेतस मूर मना पर बिसरे तेरी गुण गलिया रहा ना हो जति सती नाही परया मूर्ख मुग्धा जन्म पाए प्रणवत भैया ब्रनवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पंचवा पई परापत मानव दे होरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया अमर काज तेरा कीता न काम मिल साथ संगत बज केवल नाम सरन जाम लग पव जल तरन कै जन्म पृथ्या जात रंग मान्य माया कै रहाओ जब तब संजम तरम न कमाया सेवा सा न जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण पेरे की राखो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही रस्मी कबीर बाज पैंती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरण में रहे हमारा अपना जान करो पिपारा हमरे दुस वह तुम गावो आप हाथ है मुँह बचावो सुधी बिसै मोरो परवारा सेवक सिख पै करतारा मोरे छानच करता करिए सब बैरन को आज करिए पूर्ण हो हमारी आशा तौर पर जिनकी रे प्यासा तुम्हें शायद को यवन त्याओ जो पर चांस तुम दे पाओ सेवक सिख हमारे तारे चिन चिन जतर हमारे मारिया आप हाथे मुझे परिया मरंग का ता स्वरिया पूछो सदा हमारी बच्चा श्री सज्जो के रक्षा राख ले मो राखना हरे साहिब सन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमो परिचिता दिस्कंता काल पाय ब्रह्मा बप तरा काल पाय सज्जु अवतरा काल पाय कर बिसन प्रकाशा सगो का किया तमासा जपन का जो गीसित थियो बेद राजन माजो जपन का सब जोगी सब क्यों बेदार में माचो थियो जपन का सब लोग स्वर नमस्कार है था हमारा जपन का सब जगत नायो देव दैज चन अब जायो आद अंत एक ही अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार ते सीखो हमारी सक प्रजाजन आप सवारी सिवकण को सब कुन सकती हो सतना को बल मोहब्बत कियो कट कट के अंत की जानते भले प्रे की फिर शांत
चीची ते कुंजर स्तूला सब करके पद कर फूला संतन दुख पाए के दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पे पशाने कटकटे पट की जाने जब उत्कार करा कर तारा पर जाता तब है पारा जब आकार कर दो कपूर तो मैं उसे दे दो सबूत जेते बदन से सब तारे आप अपनी पूज जा रहे तुम सब ही तेरा निरालम जानत भेद भेद आलम निरंकार निर्कार नंब आद नीरनाथ संभ ताका मूढ़ चार विदा जाको पेवने पाप विदा ताको कर पाहन मानते महामूढ़ कश पे न जानते महादेव को कहता से निरंकार का चिन्ह नहीं पे आप अपनी पुदह जेती बाणत बिंदन तो वही तिथि तुमरा लखन अजायब सारा कैबिट सदा प्रथम संसारा एक है रूपा नूप स्वरूपा रंग प्योर आपकी पूपा अंडर जेरित से तिजकीनी उत्पज खान बहोर रचनीनी कौफू राजा वह बैठा कहूँ स्मट प्यो संकरी बैठा सगरी शिष्ट खाए चंबा आप जगाद स्वरूप से अम्बल अब्रो छमीरी तुम करो सिक्खु बार सुख संगरो दुष्ट ठे पतित पाता सकम लश्करो रिंकाता जे अस्तोजता सनी परे तिनके दुष्ट कथ मरे पूरा गवनवत पर त्यारे तिनके तुम संकट सितारे चौका गवत बार क्या है ताकर कांडिक ने आया है अच्छा हुआ ताय सब काला दुष्ट अरिष्ट ने सब काला कृपा दृष्टि जान हर हो ताकि ताप तनिक महर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्वत सके न कोई एक बार चिंत वे संभारा खास वास्ते था वारा जिन्ना नाम बिहार कहा दारद दश वक्त तेरा खड़केत में संतिहारी या हाथ ले हमारी सर्व ठोर न हो सहाय दुष्ट तक ले बचाई सवेया पाहे कहे जब ते तुम रे तब ते को आग तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरस्त शास्त्र वेद सबे पोहो पेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखान्यो तोरा सगो द्वार को छाड़ के हो द्वारो द्वार पाहे कहे कि आज अस गोविंद दास तुहार रामकली माला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज से मन वजिया वदाया राग रतन परवार पर शब्द गावन आया शब्दोत गाव हरि केरा मंच निवसाया क्या नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रोहा नाले नाम रहू तुम मन मेरे दुख सब बिसाना अंगीकारो कहे तेरा कार्य सब सवारना सब ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस ते सो पावे सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाचे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाई करते रह सचा नाम या आधार साच नाम या आधार मेरा जिन भुख सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान की ठाकुर विटो जिससे वडियाइया कह नानक सुनो संतोष शब्द तेओ प्यारो सचा नाम या आधारो वाचे पंच शब्द तित कर सभा के कर सभा के शब्द वाचे कला चित कर तारिया पंच दूत दिवस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक ते सुख हुआ तित कर अनर्थ वाचे आनंद सुनो वड पाकियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संतापे उतरे सुनी सच्ची पानी संत साजन पे सर से पूरे कुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर आप पूरे बिनवंत नानक चरण लागे वाचे अनर्थ दूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर आप पूरे
ਬਿਨ ਵੰਸ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, संतोष विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पाइयो, जिसका सब उदारो। जे को कावे जे को पूछे, तिसका होय उदारो। ए वस्तु ना जाई, नित नित रख पधारो। ताम संसार चरण लग, तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंचवा। तेरा कीता जतो नाही, मैनो जो कीतो मैंने निर्गुण रे को गुण नाही, आपे तरसे पियोई। तरस प्यारे मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मनता जीवन। Everybody. तरस पिया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिलता जीवन। सन्मति हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली की वार राय बलवंत था सत्य डूम आखी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाव का दर करे क्यों बोल हो वह जो खीवद। देख सत पैन प्राव है परंगत दान परीवद। नानक राज चलाया सच कोट स्थानी नीवद। रहने तरियोन छत सिर कर सिफती अमृत पीवद। मत कर अपम देवती खरे जोर पराकी जीद। कुर चेले रे रास की नानक सलामत थीवद। सैठ खान दे तोस जीवद। लहने दी फिराइया नानका दो ही खटिया। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटिया। चोले सो छत निरंजनी मां तखत बैठा गुर हटिया। करें जे गुर फरमाया सिर जोग अलूनी चटिया। लंगर चले गुर शब्द हर टोट न आवी खटिया। खर्चे दित खसम दी आप खादी खैर दपटिया। होवे सिफत खसम दी नूर अर्शों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मां जन्म जन्म दी कटिया। सच जे गुर फरमाया क्यों एदू बोलो हटिया। पुत्री को न पाल्यो कर पीरो कन मुरटिया। दिल खोटे आकी फिरन वन पार उचायन छटिया। जिन आखी सोई करे जिन कीती तिने थटिया। कौन हारे किन वटिया। जिन कीती सो मनना को साल जवाही साली। धर्म राय है देवता लै गल करे दलाली। सतगुर आखै सच्चा करे सा बात होवे दरहाली। गुरु अंगद दी दोही फिरी सच करते बन बहाली। नानक आया पलट कर मल थकत बैठा सै डाली। गुर सेवे उमत खरी गुर सेवे उमत दर सेवे उमत खरी। मस्कले होए जंगाली बलवान की दर्द समदे नाय सच्चे बानी लाली। बलवान की नेक जन जिस बोती चाव पतराली। लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर क्याली। गुर सिखा के मुख उजले मन मुख थिए पराली। बेकबूल खसम नाल जा काल मरदी काली। माता खीवी सो हो सोए जिन गोय उठाली।
Horio gang vahaya tonei akha kyon nanak isar jagnat uch haddi van virkyon madana parbat kar netra basak shabad red kyon 14 रत्न निकालियन कर आवागौन चिल्कियोन कुदरत आहे विखालियन जिन एवड पिंड ठिंड कियोन लहने तरियोन छतर सिर आसमान के आड़ा चिक्योन जोत समानी जोत माहे आप पैसे ती निक्योन सिखां पुत्रां कोख कै सब उम्मत विखो चिक्योन जां संदोस्तां लहना टिक्योन फिर फसाए फिरौन सगर खाडूर जब तब संजम नाग तद होर मच गरूर लब विहाने मानसा जो पानी बूर विरिया दरगे गुरु की कुदरती नूर जिस तू हाथ न लबे तू ओठ रूर नौनद नाम निदान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करै सोइयां चूर नेड़े दिसे मत लोक तुद सुजग दूर फिर वसाए फिरौन सदगुर खाडूर सो टिक्का सो बैणा सोई दीवान पियो दादे जेविहा पोता परवान जिन बासक ने त्रै कत्तिया कर नहीं तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान चौंदे रतन निकालियन की तोन चानान घोड़ा की तो सहजता जत कियो पलान ਧਣਕ ਚੜਾਇਓ ਸੱਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਦਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭਾਣ ਸਤੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋ ਛਾਵਾਣ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਐ ਕਿਉ ਮਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੁਚਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਵਾ ਗੌਣ ਨੇ ਵਾਰਿਓ ਕਰ ਨਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਵਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸਜਾਣ ਝੱਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲੇ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਤੂੰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵਸੀ ਸੋ ਸਤੇ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪਰਵਾਨ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਮਾਤ ਅਬ ਸਿਰਜਨ ਹਾੜੈ ਤਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਤਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਡ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ ਸਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਡਿੱਟਾ ਤਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਚਾਰੇ ਜਗ ਚੋਜਗੀ ਪੰਜਾਏ ਨਾ ਪੇ ਹੋਆ ਆਪੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓਨ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਮ ਖਲੋਆ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਆ ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਨ ਰੋਆ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚਲੋਆ ਉਗਵਣੋ ਹੋ ਤੇ ਅਥਵਣੋ ਜੋ ਚੱਕੀ ਧਿਆਨ ਲਵਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾ ਪਿਆ ਮੋਆ ਦੂਣੀ ਚਾਉਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਟਵਾ ਚਾਰੇ ਜਗ ਚੋਜਗੀ ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ as we talked about earlier that we have a guest speaker coming tonight, Santvir Singh, who's going to talk to us about the concept of Ik Onkar. Santvir Singh, I'll go ahead and stop sharing here so you can share if you'd like. Okay, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So just so I'm aware, Mandeep Singh, we have until 7:30, is that correct? Yeah, 7:30 or just after time. 7:30 is probably a good time. Okay, so I'll try to stick to 7:30. That's uncomfortably close to your face. It's too close? Okay.
So Ik Oankar is a very complex idea. People have written many books about the concept of Ik Oankar. So trying to encapsulate it into something smaller and something that will be easier for you guys to understand was pretty difficult for me. I hope that this works, and I'll try to leave some time at the end. Can you hear me? We can hear you now. You muted for a moment. Could you hear me? Could you hear me before? You just said that you would leave some time for questions at the end. Okay, perfect. And can you see the PowerPoint? You just go into your, like you would normally launch into. Hanji, we can see it. Okay. Do you need your notes? No. I don't have, no. Okay. So in many ways, a lot of people use Ik Oankar as a metaphor, or they use a metaphor of Ik Oankar being the core of Mool Mantar, and Mool Mantar being the core of Japji Sahib, and Japji Sahib being the core of Guru Granth Sahib Ji. So you can think about it like Guru Granth Sahib Ji is an explanation of Japji Sahib. Japji Sahib is an explanation of Mool Mantar, and Mool Mantar is an explanation of Ik Oankar. So Ik Oankar, within those three sounds, Ik Oankar, is captured all of the knowledge, the spiritual understanding of Guru Granth Sahib Ji. It's a distillation of Guru Granth Sahib Ji. Ik Oankar appears a lot of times in Guru Granth Sahib Ji. It appears 568 times. Every section, so every dog, every subsection, so like when it goes from Jopade to Ashpadiya, or it goes from Ashpadiya to Shant, or it goes to a Var, or it goes to Bhagat Bani, every section begins with Ik Oankar. So Ik Oankar is the head of every part of Guru Granth Sahib Ji. Not only was Ik Oankar the head of every part of Guru Granth Sahib Ji and the basis of Guru Granth Sahib Ji, Ik Oankar is also the signature of the Gurus. So the Guru Sahibs, when they would write a letter, when they would write Bani themselves by hand, and they would then sign it, and it would be called Gur Nishan, the Nishan of the Guru. And the Nishan that they would do would be either Ik Oankar or a part, Ik Oankar and a part of Mool Mantar. That's how the Gurus would sign letters or Bani. So for example, if somebody made a copy of Guru Granth Sahib Ji and they brought it to Guru Har Sahib Ji, and Guru Har Sahib Ji checked the copy of Guru Granth Sahib Ji to make sure everything was okay, there were no mistakes, because back then, remember, it's handwritten, right? All of Guru Sahib is handwritten. After checking it, Guru Sahib would put their nishan on the first page to show that this Guru Granth Sahib Ji has been checked and that it is proper. So we'll look more at the signatures of the Gurus later, but it's pretty cool. We have the signatures of Guru Arjan up to Guru Gobind Singh Ji. We don't have any writing samples of Guru Nanak Sahib Ji, Guru Angad Sahib Ji, Guru Amar Das Sahib Ji, or Guru Ram Das Sahib Ji. But we do have writing samples from Guru Arjan Sahib Ji up to Guru Gobind Singh Sahib Ji. One way that scholars explain Ik Oankar is to split it up into three parts. So Ik, everyone recognizes the Punjabi number 1. Then when you put an Ura and you put a Hora on the Ura, it becomes O sound.
So this part here is the oang. So ik, oang, and then the part that goes off is called the God. Ik, oang, God. So it's made up of 3 sounds and 3 ideas. The ik part, the oang part, and the God part. What do we mean by ik? So actually, let's go back for a second. I think a lot of you, when you see ik, oang, God, you may have heard of definitions of what it is. A common definition is there's one God, or there's only one God. That's a common definition of ik, oang, God. The problem with that definition is A, it's overly simple, so it's too simple for what ik, oang, God really is. And secondly, it gives you the idea of a God in the Hindu or Christian sense of a God. So the Sikh idea of Vaheguru is very different than the Christian or Muslim or Jewish idea of God sitting up in heaven, looking down on creation. In their system, Vaheguru is above creation, and creation is separate from God. In the Hindu system, gods and goddesses are also separate from people. But ik, oang, God is something very different. It doesn't just mean one God. We'll come up with a better definition as we move through the presentation. One second. So ik comes up in Bani again and again. Here Guru Nanak Sahib Ji is emphasizing the concept of ik. Guru Sahib Ji is saying, Sahib mera eko hai. Eko hai pai, eko hai. Guru Sahib Ji is speaking to us, calling us brother or sister, and Guru Sahib Ji is saying, hey, my Sahib, my Vaheguru, there is only one. Only one, only one. So Guru Sahib Ji says eko hai 3 times in 2 lines to really emphasize that Vaheguru is only one. In Sikhi, there is the idea of duality. You will see duality, that word, come up a lot in translations of Guru Granth Sahib Ji. And duality means when you look at another person or you look at yourself and you think that you are separate from those around you. When you look at yourself and you think you're separate from the Vaheguru inside of you, you have duality. When you look at a friend or a neighbor or even an enemy and you think that they are different from you and you don't realize that they have Vaheguru inside of them like you have Vaheguru inside of you, that is duality. So in Sikhi, we are trying to pierce duality. We're trying to get rid of duality. And we are trying to get to ekta, to oneness. When we have oneness, then all of these other problems will go away. Why does oneness get rid of all of our problems? Well, oneness stops us from treating other people badly. Oneness stops us from treating ourselves badly, because we will say we have Vaheguru inside of us, we need to behave in a certain way. We need to act in a certain way. We need to look a certain way because we have Vaheguru inside of us. We need to keep our case, for example. We need to behave in a certain way because we have Vaheguru inside of us. So ekta, oneness, that is in a sense the main goal of Sikhi, to get rid of this idea of duality. In Sikhi, everything is one. So when Guru Arjan Sahib Ji writes Bani in Guru Granth Sahib Ji, they don't sign off the Shabad Arjan Dev or Arjan.
they sign off the Shabad Nanak because there is only one Guru, and that Guru went from generation to generation, from Guru Nanak Sahib Ji to Guru Angad Sahib Ji to Guru Amar Das Sahib Ji to Guru Ram Das Sahib Ji, and on and on and on. So even our Guru is one. There is no second Nanak. There is only one Guru Nanak that had 10 forms and now is in the Khalsa Panth and the Guru Granth Sahib Ji, which together form the one Guru. So we have one Vaheguru and we have one Guru. And we are united as a Panth under one Nishan Sahib. So of course this is ideal. Now you know that in reality, unfortunately, there's fights within the Panth quite a bit. But the ideal is that everybody join together under Guru Granth Sahib Ji as one Khalsa Panth, and that we are one Panth under the Khalsa. Sorry, under Guru Granth Sahib Ji. Now, when we look at the Khanda, the middle symbol, which is the actual Khanda, this is a very important because it is also a very special sword. It is one sword with two blades. It has a sharp part on one side and a sharp part on the other side. And Guru Gobind Singh Ji used the Khanda to make the Amrit in 1699 for a very, very important reason. It's one, it represents Vaheguru. So in Guru Gobind Singh Ji's Bani, Sri Bhagoti Ji Ki Vaad, Guru Gobind Singh Ji says, Khanda Prithme Saj ke jin sab sansar upaya. That the Khanda made the entire world. Here Khanda means Vaheguru. So Khanda represents Vaheguru. And it represents Vaheguru because Vaheguru can cut down two things: falsehood in the world and falsehood in our mind, to bring unity to everything. So the Khanda is a symbol of unity. It's important for us to also remember that we have only one Guru Granth Sahib Ji. We have other scriptures that are important that we should read and that we can do kirtan of from these compositions, but they are not as equivalent as being our Guru Sahib. So Dasam Granth, Guru Gobind Singh Sahib Ji's Bani, Bhai Gurdas Ji's Bani, and Bhai Nand Lal Ji's Bani, all three of these are very respected in the Panth, but they cannot be at the same level as Guru Granth Sahib Ji. We can only have one Granth. So to reiterate, oneness is about getting rid of any divisions between you and Vaheguru, and getting rid of any divisions that you see between other people and Vaheguru. The way to achieve that oneness, of course, is a topic for another day. And you have talked about it, I'm sure, quite a bit already in other classes, which is through Nam Simran and through Bani and through Seva, right? That's how we get that oneness. Oankar. Next, we're going to look at the second and third part of the word, Ik Oankar. So I tried to think of a definition, and the definition I thought of was perfect, divine. Divine is a word meaning something special that has to do with Vaheguru. Creative force. That's one way of understanding Ik Oankar. So one perfect creative force. Vaheguru is perfect. There's nothing that can be as perfect as Vaheguru. Vaheguru is divine, and Vaheguru is creative. Vaheguru creates life. We're going to talk about how Vaheguru creates life in a second.
Guru Nanak Sahib Ji explains Onkar in his Bani, which is called Onkar. It's a Bani in Rag Ramkali, and it is in Ramkali Dakhni, and the Bani is called Onkar. And this is the first pori of Onkar Bani. Guru Nanak Sahib says, Onkar Brahma Utpat, Onkar Kiya Jin Chit, Onkar Sel Jug Pe, Onkar Bed Nidame. Guru Nanak Sahib Ji was at a very famous Hindu temple named Omkar, after the Hindu word Om. And the word Ong and Om are closely related. But Guru Nanak Sahib Ji went to that temple and he said, no, 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 no. You have it all wrong. You think that Omkar, that it just refers to Brahma, the creator God. And Guru Sahib Ji says, actually, even the creator God was made by Omkar. Omkar is much more than just one of your Hindu gods or goddesses. Vaheguru Sahib Ji, or Omkar, another word for Vaheguru, Omkar made the creator God, and the creator God even meditates on Vaheguru. One second. Okay, I figured out how to draw. Look at this. Omkar Sabad Udre. Omkar saves the world through Guru Shabad. Saves the world through Guru Shabad. Omkar Gurmukh Tare. Omkar saves the Gurmukhs, those people who are connected to Guru. And Onam Akar Tirupavansar. So all the worlds, here the Guru Sahib Ji says 3 worlds, but the metaphor is meaning all the worlds, everything in creation is infused with Vaheguru Sahib Ji. Let's go to another definition. Okay. This is Guru Gobind Singh Ji's definition of Onkar. Guru Gobind Singh Ji says in his Bani called Akal Ustat, which is about praise of Vaheguru, he says, Parnavo Ad Ekankara, the very first thing that I give my fateh to, the very first thing that I respect is Ik Onkar. Jal Thal Mahiyal Kiyo Pasara. This Onkar is in the water, it's in the earth, it's in the sky, meaning land, earth, water, all those different ideas, right? So all of creation. Ad Purkh Abgat Abnasi. This Vaheguru is Ad Purkh. So they are the first being. They are Abgat and they are Abnas. They are not manifested and they are immortal. They cannot die. They're Akal Roop. Lok Chaturdas, the way Guru Nanak Sahib Ji said 3 worlds, Guru Gobind Singh Ji uses a different metaphor, 14 worlds. It says, all of the worlds are illuminated by Vaheguru. So, one second here. The simple answer is given in Asakivad. Eho jag sache ki hai kotri, sache ka vichvas. The world, the creation, is a residence of the truth, and the truth permeates throughout all of it. So Vaheguru Sahib Ji, Ik Onkar, this one Vaheguru, and Onkar again is meaning creative, perfect creative force, makes the universe. But not only does Vaheguru make the universe, Vaheguru mixes themselves into the universe.
That's the key difference in Sikhi understanding and other religions' understanding of Vaheguru. That Vaheguru is mixed in to the universe. So that in everybody, in an ant or in a hathi, right? That comes a lot in Bani, right? That in a hathi or in an ant, it doesn't matter if one is bigger or one smaller. Vaheguru Sahib Ji is the same in all of them. Vaheguru Sahib Ji lives within all of us, but Vaheguru Sahib Ji is not closed up by us. Meaning, Vaheguru Sahib Ji exists also outside of creation. So one day, this universe will have to die because the universe was born, and anything that's born has to die one day. When the universe dies, Vaheguru Sahib Ji will still be there. Vaheguru Sahib Ji cannot be killed or destroyed because Vaheguru Sahib Ji is sepang, right? It's self-created. It was not, Vaheguru Sahib Ji was not made by anybody. So those are the two big ideas to try to think about with Oankar. That Vaheguru Sahib Ji is mixed in to the whole world, to the whole universe, but Vaheguru Sahib Ji is also separate from the universe. It exists away from it as well. So that when the universe ends, Vaheguru doesn't end with the universe. This is a very unique idea that is not found in any of the other major world religions. So if you study Christianity or Islam or Hinduism or Buddhism, they only get half the picture. Guru Nanak Sahib Ji revealed to us the full truth of how Vaheguru Sahib Ji works. So we're really lucky that we were given this understanding that Vaheguru Sahib Ji is infused in the universe, but also, and the word we use, it's a big word, we say Vaheguru is also transcendent from the universe as well. So Vaheguru Sahib Ji is also above the universe. I've already done this slide now. Okay. So we've talked about Ik and On. What's the point of the line here that goes up from the Ik Oankar? This is a beautiful old ang of old copy of Guru Granth Sahib Ji, the first page of the first ang of Guru Granth Sahib Ji of an old Sarup. And if you can see here, the Oankar comes out of the border. It erupts from the border and it comes out of it. Because what the God represents, what that line represents, that goes on and on, that line represents that Vaheguru is within all of us equally. That's what that line means. It means Vaheguru Sahib Ji is here and you and I were all full of Vaheguru. And you'll see in a lot of old Guru Granth Sahib Jis, the Ik Oankar will get out of the border. It will break out of the border. It will go above the rest of the Bani and up into the patterns on the young. Here's a really beautiful one where it goes all the way up and then comes back down there and creates this beautiful curve. So Oankar represents this blossoming. You can think of it like a flower. That's why it's open like that. That's why it's shooting out like that. It's like a flower opening. And it's a flower of Vaheguru opening within all of our hearts. That's a simple way of understanding why the shape is made like that. So Ik represents our goal to be one with Vaheguru. Oankar represents Vaheguru creating everything and then mixing themselves in everything and in everyone equally.
everyone equally is very important because you guys are all kids. Sometimes kids are treated not as well as adults in some situations. But we can see from Sikh history that, for example, Guru Harikrishna Sahib Ji was much smaller, much younger than the other gurus. But that didn't make him less of a guru. That didn't make him less of a person. So this is a really important message and understanding. It doesn't matter how big or small the animal is. It doesn't matter how big or small the person is. It doesn't matter what abilities the person has. If they're disabled or if they are able-bodied, whatever the person, whoever the person, they all have the equal amount of Vaheguru inside of them. And that's a really wonderful and beautiful idea. It ties into what we talked about last time, was when Guru Nanak Sahib Ji left the river and he said, na koi Hindu, na hi Musalman. So essentially Guru Sahib Ji was saying Ek Oankar when he left the river. He was just saying it in a different way. That was the main message he was trying to say. Ek Oankar, you can see, is a really big idea that we can talk about a lot. We can talk about each of the three parts of it for a long, long time. And I've only used one or two shabads to explain each aspect, but you can find many, many shabads to explain it. If there's any parents listening or any adults who are listening, there's a very good book that I used today, which is Japji Sahib Steek by Paivir Singh. So Paivir Singh did an explanation of Japji Sahib, and in it he does a really good explanation of what Ik Oankar means. It's not too long, so it's not like crazy long like a whole book, but it's not too short either. And it uses Bani to explain the concept of Ik Oankar in about 6 or 7 pages. So if you have a copy of this book or you can find it online, I recommend that you read this book to understand. It's an explanation of Japji Sahib, so it's really wonderful for the rest of it. But if you want to understand Ik Oankar, it's a very good place to start. I thought some of you might be interested in seeing the signatures of the other Guru Sahibs. So on the left is Guru Harai Sahib Ji, and on the right is Guru Harkrishna Sahib Ji. There's Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, and then on the right is Guru Gobind Singh Ji. Now, for Guru Gobind Singh Ji, you'll see this weird symbol. He would draw a symbol with his Ik Oankar, and what the symbol is it represents Deg, Deg, Fateh. So the circle represents Deg, and this is supposed to be a sword. It's a Deg. So Guru Gobind Singh Ji would write Deg, Deg, Fateh with his signature. This is on the left, Mata Sundari's Nishan, because she also issued Hukamnamas after Guru Gobind Singh Ji left this world. And on the right is Mata Sahib Kaur, and you can see she also has a Teg symbol above the Ik Oankar. And I really love her Ik Oankar, the way that it loops up. It's beautiful. And on the left here is Bhai Gurdas Ji, and on the right is Baba Banda Singh Bahadur. Those are the historical ones that I've been able to find. Now let me go into gallery mode and let me stop sharing. And does anybody have any questions about the concept of Ik Oankar? Hanji Anil Kaur. I had a question about Mata Sahib Kaur's Mata Sahib Kaur, Mata Sundari Ji's signature. It had an X at the top. I wondered what that meant. Yeah,
Like I was saying, the X represents Deg Deg Fateh. So it represents a Deg. It's supposed to be like a symbol for a sword. It's just that when they write it quickly, it looks like an X. But it's a sword symbol. Anybody else? Any other questions? No? I will let you guys go then. You've had a long and busy day, I'm sure. Hanji Mandeep Singh? I was just wondering, could you spend a moment? I know a lot of times when we learn about Sikhi in English terms, we talk about it being a monotheistic faith. I think that's the common word many of us have heard. Yes. Do you have any opinions on what on that word, or maybe better words we could use in English when we have to describe Sikhi to like our friends or understand it ourselves even in English? So that's a good question, and it's really difficult. You know, those of you who have to explain your case or your kirpan or your kara to non-Sikhs know how difficult it is, because there's no one sentence easy explanation for these things. You have to really sit down with a person and go through a few things so that they can understand where you're coming from and what you mean. So monotheistic is a really lazy way of understanding Vaheguru. I wouldn't call Sikhi monotheistic. In my own understanding, I would say it's panentheistic, which means that Vaheguru is in all things, but also separate from them. So pantheistic means Vaheguru lives in nature, or Vaheguru lives in the universe. We believe that, but we also believe that Vaheguru is above that as well. Because when nature will die, when the universe dies, Vaheguru won't die with the rest of nature. So that's one thing to keep in mind, that everything that's born has to die. That's why only Vaheguru Sahib Ji is the only thing that will last forever. Okay, did that help, Mandeep Singh? I don't know, or did it? Thank you. Okay. Okay, so I'll say Fateh and you guys can get on with the rest of your program. Thank you so much for your attention and for listening. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We are going to, I want to thank Sankhbir Singh for that. Like he mentioned at the beginning, it's a very difficult topic. I mean, Gurus have spent so much time just trying to explain this idea of Ek Onkar. I'm hoping that maybe we can start a class here soon to go over all of Mool Mantar in detail so that we can have a real good, strong base understanding of what Guru Sahib is trying to teach us. The rest of the program will have our Das now, followed by Hukam, and then at the end we'll have Swela Part. तुझे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब ते वडियाई कोई नाम न जाने मेरा। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती की भगवती सी की पाशाएं दसी प्रथम भगवती समय कहे गुरु नानक लेते आए अंगर करते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हराय श्री कृष्ण ते आए जिस डिठे सब बुझ जाए तेग भाद सिमरिया गुरु नौनित अवताय सब थाई होए सहाय तस्वा पाशा गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय तस्सा पाशाय दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते पाठ दी रात दा ध्यान रखे बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारा चोय साजादिया 40 मुक्तिया हटिया जपिया तपिया जिन नाम जपिया वन चकिया तेग शराय तेग भाई तेग के अंडर कीता तना प्यारे सची अर दी कमाए ता ध्यान रखे बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंह ते धर्म हे सीस देखे बंधन कठाए कोपरे लहाया चके ते चढ़े आर्य ना चराए गए गुरुद्वारे दी सेवा नहीं करवानी कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी कैसे स्वासा नाम दबाही तना दी कमाए दा ध्यान रखे बोलो जी वाहेगुरु। पंच तख्त सर्व गुरुद्वारे दा ध्यान रखे बोलो जी वाहेगुरु। पित में सर्व खासा जी की अरदास है जी सर्व खासा जी को वाहेगुरु 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 चितावे जितावन का सदा सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खासा जी साहिब तहाँ तहाँ रचे रहे तेग तेग फतेह पेट की पैज मंत की जीत श्री साहिब जी सहाय खासा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान
केसदान वैदान विवेकदान भरोसादान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर दी दर्शन स्नान चौके चंडे पंगे जुग जुग टल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु सिखा दा मानी व मतोची मत पता रखा आ वाहेगुरु हे कालपुर अपने पंथे सदा सहाय ताता जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गढ़वारिया गर्दामा दे जिन्ना तो पंथ नो विछोड़ी गया है खोले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खासा जी नु बख्शो हे नमानी दिवान नितानी दितान नोटर दी और सच्चे पे तो वाहिगुरु आप दी हुजूर अरदास बेनती है ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ 16 ਪਾਠ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਆਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਪੋਚਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਰ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ सजन सच्चा पातशाह शाह ने चाहो जिस पास बैठे सो ही है सबना दा वैसा तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सुरा आत्म जड़ा सगल वस्ता क्या जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सुरा आत्म जड़ा सगल वस्ता क्या जाका सतगुर पूरा ठाकुर गैया आत्म रंग शनि पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण बसे मेरे हीरा संग पुनीता देखी जन की तूर दया कृपा ने नानक कै सुख एही जन के चरण बसे मेरे हीरे संग पुनीता देखी जन की तूर दया कृपा ने नानक कै सुख एही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. This is Balpreet Kaur. And today's hukam has been gifted to us by Guru Arjan Dev Ji, the fifth Nanak, and it's paired with Rag Tanasari, in Rag Tanasari. So it's a short shabad. Many of us have probably heard this as a hukam before or have heard it being sung in Kirtan. And it fits really well with this idea of Ikonkar that we've been talking about today. So there's 3 stanzas. Each stanza has 2 lines. And the Rahau stanza is in the middle. So we're going to start there. And the Rahau line outlines how do we really connect with Ikonkar? How do we realize it within ourselves? And what is that way? And so Guruji says, Thakur Gaya Atamrang. And it's addressing us as an instruction that let's sing and praise Thakur, Ikonkar as the Thakur, as this powerful force in our lives. Atamrang, with this deep, heartfelt love and appreciation. And then the next line explains that a little bit more. Sharni Pavan, Naam Tyavan, Sahaj Samavan Sang. And as we remain in the sanctuary and the safe haven of Vaiguru, and we remember and meditate and reflect on Vaiguru's qualities, Naam Tyavan, Vaiguru's all the different ways that Vaiguru manifests in our life,
you know, Sant Ji did a great job of outlining different qualities. Guruji does that as well. Like how Waheguru is pervading throughout the sky, air, and earth. That's one quality. Waheguru is deathless. That is another quality. Waheguru is transcendent or beyond creation. That's another quality, right? Doing this in our daily life and recognizing and remembering those qualities and feeling them and experiencing them, we truly Sahaj Samavan Sang. We merge our spirits and our beings with Waheguru, meaning we lose our duality. Sant Ji also touched on that. We lose our duality, and instead we exist in this state of oneness with Waheguru. So easily, Sahaj Samavan Sang, so easily and so naturally. So the Rahal line is really showing us how do we connect with the one, and how do we get rid of this distance between us and Waheguru, us and creation. So Thakur Gaya Atamrang. And by connecting to Waheguru in this way, right, brings a sense of power and a sense of capability in our lives, right? Jako har rang lago is jug mein. Those that are drenched in this love, in this color, in this world, in this moment, so kahiyat hasura, they are the ones that are considered true warriors, right? Because once again, Guruji reminds us that this path is really hard, right? And we have to fight. And we have to fight with what? We have to fight with our mind. And the person that fights with their mind and connects to Waheguru in a loving and heartfelt way, that person is a true warrior. That person is a true defender of principles. Atam jina sagal vas tanka janka satgur pura. And those that have connected to Waheguru and have loved Waheguru with the help of the Guru, Janka Satgur Pura, the complete and perfect Guru, they not only are able to, instead of their mind controlling them, they control their minds, and they're capable of everything. Sagal vasataka, and everything is within their power and control, meaning that nothing feels overwhelming to them. Nothing is a surprise. Nothing is, they never lose their cool, I would say. Sagal vastanka. So when you conquer your mind, you conquer the world, right? You become resilient. And that is the sign and a signature of a true warrior that is connected to Waheguru through the Guru. And so in the last stanzas, Jan ke charan vasa mera hira sang punita dehi, that not only do I want to connect with Waheguru and merge with Waheguru, but I want to be in the presence. I want to be inspired by those Sure, basically. I want to be inspired by those warriors who are connected to Waheguru. Jan ke charan vasa mere hira, sang punita dehi, that this is my sangat. And their inspiration exists in my heart because they're inspired by the one. I too want to be inspired by the one. Sang Punita Dehi, and with them, in their company, in associating with them, in learning from them, my sorry about that. My Sang Punita Dehi, my body becomes free of filth, meaning I am making loving
and pure decisions. I'm using my body as a tool of goodness. I am using my body to not only fall in love with Waheguru, but I'm also extending that same love to everyone I meet and everything I see, right? So jan ki tur deho kirpanid nanak kya sukh ehi. And Guruji ends this Shabad with an ardas that please Vaiguruji, as the kirpanid, this is another quality of Waheguru as the treasure of mercy or of grace, of love. Janki tur deho, give me the dust of these individuals who are connected to Waheguru with heartfelt love, who are conquering their minds with the help of Guru. Because in their company, I feel like this is my only satisfaction. And it's true, right? If you, I personally feel this way, like when I feel away from Sangat, away from people who inspire me towards Waheguru, then I feel like I am all alone and I can't, I feel agitated, I feel lonely, right? But when I'm in the company of Gorsiks, when I'm in the company of people I consider who have qualities of Waheguru in them, then I feel inspired to be the same way, right? And so if we want to learn how to connect with Waheguru, we not only have to read Barney and we have to know our history and we have to put it into practice, but we also want to observe and learn the virtues from people who are putting it into practice as well, and learn to recognize those jewels within each other. So again, Thakur Gaya Atam Rang, Sharani Pavan, Nam Tyavan, Sahaj Samavan Sang. So let's all sing and praise Vaiguruji from the depths of our heart and remain in Vaiguru's sanctuary. Remember Vaiguru's virtues and qualities, and we'll see how easily our duality is removed, and we can really truly practice oneness that Sant Biriji was talking about. So that being said, can I have Harjap Singh start Sohila? Harjap Singh, sorry, to start Sohila, and then we will end the call here. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Wela Ragari Dichi Mela Pela Ikuka Sakra Prasad Jakat Kira Takia Kateka Hoi Bicharo Sitkal Gabo Suela Sevra Surjanhar Tam Gabo Mere Ne Poka Suela Havari Jit Suela Sada Sakhoe Raha Net Net Jire Samaria Dekha Ka Devanhar Tere Tane Ki Batna Pave Tistate Tere Tane Ki Batna Pave Tistate Kavan Samar Sambat Saha Lekha मिलकर पावो तेल ते सजन असीसिया जो हो वे साहिब स्यो में कर कर एहो पहुंचा सदन नत पवन सदन हारा सेमिये नानक से ते आवन राग आसा महला पहला छेगर छे उपदेश गलगल एको बेस अनेक बाबा जेकर करते कीरत होए सोकर राग वडाय तो रहा वसे चस्या कड़िया पारत तिथि वार मा हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक कहते के कहते वेस राग का नासरी मला पहला गगन में था रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप में आलो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पफ खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहा शास्तव नैन न नैन है तोहे को सास मूरत नना एक तो ही सास पद विमल नन एक पद गंध बिन सास्तव गंध इव चलत मोहे सब में जोत है सोए तिस दय चाणन सब में चाणन होए कुछ साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो
अंधनो मोय आई प्यासा कृपा जल दे नानक सरंग को हो जाते तेरे नाय वासा। रागोरी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर भो बरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लखत लके गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पनवडा है। खडंडोत दंडोत पुनवडा है रहाव साखत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो में खंडा है। ज्यो ज्यो चले जुबे दुख पावे जुम काल से सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा है। अबनासी पुरख पाया परमेश्वर वो सो खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड्डा है। जो नानक नाम अतारते के हर रामे ही सुखमंडा है। रागोरी पुरी महला पंजवा। करो बनंती सुर में नमीता संत है टहल की बेला। यहाँ काट लो हड़लाहा आगे बस ने सहेला। औदक दे दिरस रे नारे मन कर मिलका जसवारे रहा। इस संसार बेकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जिगाए प्यावे ए रस अकत कथा तिंजानी। जाको आए सोए बिहार हर कर तेम रे बसेरा मुझकर मेल बहो सुख से जय बार न होए को फेरा। अंतरजामी पुर खबदा थे शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे। अंतरजामी पुर खबदा थे शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की fateh. Hope to see everybody tomorrow morning for Nityanam at 8 a.m. Waheguru Ji Ka Khalsa.